Dikaitanali Krishna Krishna Bhaktaya Tada Bhaktaya Namo Namaha Sri Nandanandanam Bande Radhika Chananadvayam Gopijana Samayuktam Vrindavan Manoharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sati Gaura Bhakti Mangashamami Chaturyabato Mandir Pratandira Param Jaram Jogo Vrindavan Nivasinam Giriya Saddama Piyamodaram Radhas Kanda Niveshita Ujjvala Pujam Dayam Damodaram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So first of all I offer pranams to our Gurudev, Narayan Goswami Maharaj, Ashik Guru Sri Gauranga Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, all devotees, pranams. Despite what Sadhu Maharaj said, Kartik Vrat is not over. We still have 9 more days, thank God. So, everyone may be feeling a little tired, I hope not. This chance not come to everyone. How many living entities in the universe and how many here for Kartik Vrat? We're lucky. So, we're talking about desire. Desire is not bad. If you desire something bad, that is bad. And desire change. Like when we were small, we thought what was important? Toy cars and Lego. So desire also changed. By association, desire changed. So he's praying, I do not want liberation. Na moksha vidimha, again and again saying. Na chanyam pranayam parishadam. I don't want these things. So we were talking last night, apart from Vaishnavism, all are pretty much impersonalists. Whether yogis, whether karmis, jnanis, this religion, that religion, the foundation of all, they do not accept the form of God. Even in India, mostly, if you scratch beneath the surface, mostly people are Panchupasak. Just choose any form, it's all the same. Krishna, Ram, Ganesh, Shiva, Sai Baba, doesn't matter. So this feeling is very much dangerous. It destroys devotion. So only if someone is very fortunate, they come out of that conception. How you come out of that conception? Only by some contact with a Vaishnava. No other way. Bhaktivinoda Thakur it describes, because the soul is a spark of the Swarup Shakti. And therefore the qualities of the Swarup Shakti, Sat, Sandini, Samvit, Ladini, they're minutely present in the soul. Not fully present. And therefore the soul in this world can taste Brahmagyan. The potency of existence is there in minute, impersonal existence, impersonal knowledge. And the potency of Ladini that is present in Jiva in a minute form, in the form of impersonal happiness. That without the mercy of devotee, by their own efforts, no one can come out of impersonalism. So therefore should always keep this association. So it's not a matter of small good fortune, someone accepts the form of Krishna. Even in India, most people accept when you're a little scratch, they think this form is temporary. Most people, even in India, they think this form is temporary form. But only the Vaishnavas believe, no, God, Krishna's form is eternal. And the soul also has a form. Soul is not formless.
who was saying yesterday? I think it was Jayashree. She thought God was just a blob of nothing. Quote unquote. People believe, most people believe there is a God, but who is He? What is He? No idea. He exists, but He's everywhere. He has no form, which is one form of atheism. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, okay, Nilavri, listen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, those who accept God but don't accept the Vedas, they are atheists. So, Idante Vapurnata Gopala Balam Sadame Manas Avirastam Kiman. So Satyavrata Rishi is giving up all other desire. Again and again we see the devotees give up all other desire except the desire to serve Krishna. The desire to serve Krishna is not a material desire, because you desire to serve Him for His happiness. So it's not a selfish desire. So it's like Krishna Bhakta Niskarma Ataiva Shanti Bhukti Mukti Siddhi Karma Ataiva Shanti. Only the devotee is peaceful. Shanti. Why? Because they have no desire for anything for themselves. Someone can say, but desire to serve Krishna, this is desire, but this is not selfish desire, because they desire to serve Krishna for their happiness. Like the cowherd boys. Like Ambarish Maharaj, it said all his desires he used in the service of Krishna. So desire is good if dovetailed in the service of Bhagavan. Like Gurudev was talking one time about the Davanala, the fire in Vrindavan. All the cows and calves went to the forest. And there was one forest of manju grass. Manju is like a big dry. It has the white top on the top. This is manju rasa. So it's very flammable. So one servant of Kamsa wanted to finish all Krishna's calves and boys. So they made a fire. There are no cows and boys suffering. Krishna, Krishna, save us. So I remember Gurudev, this seems to be non-devotion. Oh Krishna, save us, Krishna, save us. I remember Gurudev said, that's right, only you have devotion, the coward boys have no devotion. He was joking. Then he said, oh Krishna, save us, because if we die, who will serve you? If you die, you will be sad, so save us. Even devotees have desire, but all that desire is actually for Krishna's satisfaction, Krishna's happiness. So, Yadante Vapurnata Go Sadame Manas Avyastam Kiman. So devotee at this stage have so much greed to remember Krishna. Our greed is very weak. Our mind always goes to other objects. So devotee again and again we have to hear. Like Britasu. Nanak Preshtam, na Chaparameshtam, na Sarvabhaumam, na Nasadi Patam, na Yoga Siddhina Apunanuvamscha. He prayed. Oh Krishna, Nanak Preshtam, I don't want any to become king of this earth planet. Nanak Chaparameshtam. I don't even want to become Sarvabhauma. That means like emperor of the earth. Or even the position of Lord Brahma, the king of the universe. Narasadi Patyam. I do not want residence in the lower planets. In the lower planets is so much enjoyment. Narasadi Patyam. Na Yogi Siddhi, I do not want yogic perfections. Like you read autobiography of a yogi. That book, the first half of this book is just describing the yoga siddhis. One yogi, he would meditate and bring pomegranates from Afghanistan by his meditation. So many people enchanted by that. Oh, how wonderful. The devotee gives up all these desires. Na yogi siddhim, na apunavamscha. I even want to give up the desire of freedom from birth and death. I don't want liberation. No? If Krishna said to the devotee, I want you to take birth again, devotee happy, yes. If you want, I'm ready. Like one time Vicky was talking about this.
like the horrible nature of the material world. And then she said, but still, no, we are happy here. We have Thakurji, we have Radha, Lalit Madhav. Imagine a temple without Radha, Lalit Madhav. So we have Thakurji, we have Prasad, we have Tulsi, we have Harikatha, we have Vrindavan, we have Gurudev Sangha. So this type of birth is actually great happiness. Actually, it's that the devotee don't mind taking birth again and again because they're so happy. Okay, if I die, I have to take birth, but let me take birth. Esa kripa karo sina diyo Vrindavan ko bas. Okay, if I have to take birth, let me take birth here and somewhere in Vrindavan. Let me, wherever I take birth, I want association with devotee. Like Bhaktivinoda Thakur here. Kita janma hao jata tuhadas bahir mukha brahma nahi moras. Okay, Krishna Chandra, still awake? How can someone sleep while standing up? That is truly a yogic city. We were talking about yogic cities, there he is. Who can sleep while standing up. What was that talking about? Something important with that. Oh, Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur promised. He prayed, Krishna, I don't mind even taking birth as a worm, as long as I'm a devotee worm. As long as I can be in the house of your devotee. No. So sometimes devotee may make a mistake, but Krishna is very kind. No. Like sometimes, like it said, all these pigs and monkeys, I've heard, last life they were devotees but did some aparad. Maybe they stole some money or a little greedy or lusty. So Krishna punishes them, but it's not a punishment, it's one blessing. Okay, you were very greedy, like a pig, you were very lusty, like a monkey. Be a pig and monkey, but in Vrindavan. Here in Vrindavan, even the monkeys do pranams. Monkeys always take prasad. But don't kick me out of Braj, don't kick me out of sadhu-sangha. So devotee always has this desire, but no other desire. So sometimes devotee even make mistakes, but still Krishna keep them in sadhu-sangha. Actually, should I tell the story? It's a long story, but it's quite interesting. When I was in Hawaii, there was one disciple of Gurudev. She's a bit mystic. So she was telling the story, she had one bird. Some bird. And this bird, every time you put on the kirtan, he would dance. Every time. You turn off the kirtan, no dance. On kirtan. Every time. Something. Canaries. And of course, because bird in the devotee house always getting prasad. Then he died. The bird died. And that night, the bird came in her dream, in a human form. And bird said, thank you very much. Last life I was devotee. I made some mistake. And now I become bird, but you are too much kind. You always give me prasad, you always give me kirtan. So I'm thanking you very much. Now I'm moving on to my next destination. Then she saw the devotee in the dream and she knew that devotee. So she pointed to him, this is him. And she showed me a photo. And I became shocked because I knew him. He was like, and this devotee, he was from Cuba. I remember, he was the first Cuban devotee I ever met. Lakshman's only half Cuban. And half devotee. So I remember that devotee because he was the first Cuban Hare Krishna I'd ever met. So I remembered him. I forget his name. Anyway, but I remember his face. So I was just, that was astonishing for me. And then a few years later, I was in San Francisco. And we were talking about that. I didn't tell him about the bird story, but we were talking about that devotee. And he told me that the second half of the story. He said, what he used to like Gurudev. Maybe he was a good disciple, I'm not. Maybe he was a disciple of Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, but he liked Gurudev. He would come for some.
Then another devotee told me this story. One day he came to Gurudev with a bird in a cage. And he taught this bird to speak, and he thought Gurudev would like it. But Gurudev became very angry. And Gurudev chastised him heavily. You fool! Gurudev called him a fool. You fool. Get rid of this bird immediately. Get rid of it. And Gurudev was quite angry and strict. Get rid of this bird. Get rid of it immediately. You don't need this in your life. So the devotee was okay. So he put the bird for sale in a bird shop, in a pet shop. But he was so attached to the bird, every day he would go and visit it. And then he got a job in that shop, just to be next to the bird. He died, and what was he thinking of the time of death? Bird. So that's his bird, Hawaiian, human, bird in Hawaii, suffer. Then again some chance. So Krishna is very kind. I don't know. Anyway, so Sadame Mana Sarvastam Kimani. You have to remember Krishna. If we think of something else at the time of death, you will go there. No. So first, he's just remembering Krishna, but remembering Krishna also give a result. He wants to see Krishna directly. No. So he's talking here. Dham Sadi Maharaj was discussing this. Krishna's form so much attractive. So devotees should always hear Krishna's name, Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's activities. Like this different type of kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. This is Nam Kirtan. But all this describing Krishna's form, this is Rupa Kirtan. Idamti Mukam Bojamavyakti. Krishna dark like a rain cloud. Gurudev had one African devotee, Ashram Maharaj. And he asked Gurudev, is Krishna black? And he said, yes, but Krishna's very beautiful, not like you. That very charming form of Yakti, like Neela Radha Lalit Madhav. After Abhishek, how much he shines. Have you seen? So much he shines, especially after Abhishek. Especially after some Chapan Bhog, then he really shines. So, Avyakta Neela. His hair is also very black. Normally babies are born, mostly no hair, right? Or some bits here and there. But Krishna born with full head of hair, very attractive from birth. Britam Kuntali Snigdha Rachastra Gopa. That hair covers his face sometimes, because quite long. Therefore, in Gopi Gita, the gopis pray, oh, Krishna's hair, this is like a net, like a trap. And the gopis' eyes are like Kanchanaksha birds, like wagtail birds. Like Radharani's eyes are very restless. Like in Australia we call them willy wagtails. These birds, their tails go like that. Radhika's eyes like that. So the gopis, like birds, very greedy to eat something. The gopis' eyes, very greedy to taste the beauty of Krishna's face. Therefore, but this hair of Krishna like a net, like the bird goes to eat the bait and then capture it. So the gopis say, once our eyes go to your face, your hair traps our vision. Our eyes cannot go to another place. So this hair is a little bit very sweet, very attractive. The devotees always meditate on that hair. Even they say the hair is very bad. The hair is like one type of stool. Hair and fingernails. Like stool and urine come from the body. Hair and fingernails, one type of stool. But Krishna's even hair and fingernails, so much attractive. Like we said, Brahma, Rupa Goswami says, so much nectar coming just from the toenails of Krishna. From the like Chaitanya Mahaprabhu's hair also. Chaitanya Mahaprabhu's hair like capturing all the hearts of the devotees, millions and millions of devotees. So when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then all devotees, their life hair shattered. Chaitanya Mahaprabhu shaved off that hair which is very dear to us. So there was one hairdresser, his name was Madhu. Baba. Like even in India still there's a caste for a different type of work.
Like garbage man, one caste. Hairdresser, a caste. Who serves the deity, another caste. Who runs the shops, another caste. So by caste, he was what they call nabi, hairdresser. So they called him to perform the shaving head for Mahaprabhu's sannyas. Still awake, Jagannath? But when he saw the beautiful hair of Chaitanya Mahaprabhu, he refused. No, I cannot. So they did a drama here a few years ago, remember? Of Mahaprabhu's sannyas. Beautiful. Actually, it was very beautiful. Actually, when that drama was here, how did he would sit there like you sit in Harikatha, or like you sit for Gayatri, like so much serious. And beautiful conversation between Mahaprabhu and the hairdresser. Very beautiful. The original is in Chaitanya Bhagavat, if you read. The hairdresser saying, how can I shave your head? You are Brahman, I'm just an ordinary person. I cannot shave, I cannot do like this. Then Mahaprabhu said, if really you believe I'm Brahman, I'm ordering you, cut my hair. Like this very dialogue between. I am your servant, you are my master, how can I do? If really you think I'm your master, I'm ordering you, shave my hair. But Madhu did not want. But what Bhagavan wants, that will happen. So Yogamaya took him, his mind, everything, and shaved his head. But when he finished half the head, then Mahaprabhu began dancing with only half. Like intoxicated. And when all the devotees saw the hair of Mahaprabhu on the ground, all weeping bitterly. All weeping. Even those who came to make fun of Lord Chaitanya, when they saw that, they also weeping. And people just saw the crowd, they didn't even know what's happening, they just came. When they saw the people weeping, they also weeping. But why? Don't know. Then Madhu was so much, I did such a sin, such a low act. Then he said, I never do this again. So he took his razor and mirror and scissors, he took his box and threw it in the Ganga. I never shave another head. And he became a sweet maker. So Britam Kuntalishning Rachashchino. Again and again, devotees kissing, like something very cute, especially baby. There's no harm, mother is kissing, no harm. So those in Vatsali Ras also kissing, like mothers. Maybe friends also, Sakuras, something. And those in Vatsali Ras, another mood. So Mohus Chumbitam Bimba. The lips of Krishna, all the nectar of Krishna's lips in Krishna there. Therefore Krishna's lips very red. Bimba Raktadara. There's a fruit, you can see it sometimes in Vrindavan. When you go, especially Uchi ground, when you go up the stairs to Lalita Sakhi's birthplace, there's a huge bimba tree there, a vine. Huh? So that bimba fruit, very soft. Anyone seen a bimba fruit? Yeah. It's like a tomato, but a little long and very soft. You touch it, it bruises. So soft and very red. So Krishna's lips like that. Therefore the gopis say, this flute's so intoxicating. Why? He's always drinking that nectar. So gopis like co-wives, little envious. So gopis also so much speaking badly about the flute of Krishna. He is very, like to take birth as a tree, as a low birth. So one gopi says, how much Sukriti this flute has, this bamboo flute? Then another gopi criticized, how could he have Sukriti? If he had Sukriti, he wouldn't be born as a tree. Like we hear now Mani Grieve and Nal Kuvera, so sinful that now it cursed them to become trees. Because of all species of life, the tree is the poorest. Even a dog can move house to house and get a chapati, or a dog can move somewhere and drink some water. But a tree cannot do anything. Tree has to suffer. So birth as a tree is very low birth. So some gopis criticizing him too much. He is very low family. He is full of holes. He has no nectar. Then another gopi said, anyway, no matter how much you criticize him, look where he is and look where we are. You're always drinking that nectar which belongs to us. Maharaj gave an example like, imagine we fill the tiffin
And that tiffin was going to Yogamaya. Every day prasad from Radha Krishna goes to Yogamaya every day. Imagine halfway, the messenger, Singagri, opens the tiffin, what's for lunch today? So Gopi said, this flute is like this. This nectar is meant for us. We are the gopis. We are females. And this flute, he's just a messenger. He's just to deliver this nectar to us. But what's he doing? Halfway through, he's taking everything for himself. So all devotees glorify the nectar of Krishna's lips. All devotees, all rasas. And how do we get the nectar of Krishna's lips? When we take prasad. That nectar is there. We are very unfortunate. We just tasting paneer and masala, chili. Some devotees here. Where's Leelavati's son? Is he listening? Is he even here? Is Leelavati's son here? Is Leelavati here? Vyas. Vyas, don't think this is too spicy. Don't think like it's like material vision. Devotees don't taste masala or spice or chili. What they taste? The nectar of Krishna's lips. Of course, we're not that level, but at least we should pretend, fake it till you make it. Someone said yesterday. Sadhana, we are practicing to achieve that taste. But like Mahaprabhu had that taste. When Raghunath Das Goswami, we see gradation. His development was gradation. First Mahaprabhu said, go home, be with wife, be with parents, serve them. Outside be like a normal person, but inside keep faith to Krishna. But when he gave up everything, Mahaprabhu changed his instructions. Raghunath was begging food from the Food for Life. Then finally he stopped taking money from his father. Then finally Raghunath not invited me for lunch, long time. What's he doing? Then Swarup Damodar said he was also taking free food from the Jagannath temple, but he stopped that also. Then what's he eating? Then if you look at the Jagannath temple, there's a spout from the temple. A little, like a drain. You can still see it now. So all the rice, when they wash the rice and vegetables, the old rice and vegetables goes out of the drain into the one. You can't go near it now, but I guess in Mahaprabhu's time it was open. And the cows go there and eat all the rice and vegetables which comes from the kitchen. But some rice and vegetable becomes a little rotten. Even the cows don't eat it. Come on. Ever seen anything a cow doesn't eat? Quite rare. So Raghunath Goswami tastes that old rice and he washes it in the ocean. He washes it. Inside the rice is a little bit which is not rotten, very hard. So he takes that very hard inside part of the rice, he takes a little salt and eats it. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, he became so happy. Because Mahaprabhu too much happy when he see renunciation. When he see renunciation, Mahaprabhu become pleased. So Mahaprabhu heard and Mahaprabhu went to Raghunath when he was taking this rice. And Mahaprabhu snatched it. And Mahaprabhu ate a handful, 2 handfuls. And Mahaprabhu said, "Oh Raghunath, every day you are having such a feast. And you are not inviting me. What type of person you are? Like someone who every night cooks prasad in their own room. Every night, right? And never one time asked the Vaishnavas who live in that, would you like some prasad? And said, even a grihastha, before eating, they should announce, anyone want Mahaprasad, come, want to speak of sannyasi, or anyone else. Like you never see Didi cooking and eating alone in one. Always sharing. So Mahaprabhu said to him, you are like that. You are every day having feast, but you never invite me. What is your character? Mahaprabhu joking with me. Then Mahaprabhu snatched that rice and eating, and Mahaprabhu described, then Mahaprabhu went into ecstasy, described the taste of the nectar of the lips of Krishna, just taking that old rice and salt. That is Mahaprabhu's vision. Anyway, our vision is not like, but at least we should try, commence, begin.
So, Muhuschumbitam Bimbaratadana. This is Krishna's lips. This is called Adharamrita. Amrita is one form of nectar. If you take Amrita, you never die. So Gopi is complaining. We took the nectar of Krishna's lips, therefore we become immortal, we cannot die. That is like a curse. Not seeing Krishna's face, we cannot live. But because we took that nectar, we cannot die also. We cannot live, we cannot die. So, Manas Aviraste Malam Lakshala. So he's praying, I want again and again, remember Krishna. But remembering Krishna is one happiness. But directly seeing Krishna, that will be another happiness. Right, Padanta? Unfortunately, we are not remembering Krishna, what to speak of directly seeing. So seeing, meditating is one platform. But devotee not happy just by meditation. Imagine someone comes here the day after Kartik, the day we break their feet. They run here, but all the eggplant is finished, all the tomato chutney is gone. Nothing's left. They're very hungry, and you say to them, Mahamantra, just meditate on what we have. Would you be satisfied by that? You're too much hungry. So someone who is maybe someone is very full, someone has no hunger, they can meditate on food and not feel distress. But someone who is very hungry and you tell them to meditate on food, they abuse it. They become angry. So devotee, high class devotee, not happy just by meditating on Krishna, they want to directly serve Him. How can we get Krishna? How we can directly see Him? Only one way, that is the name of Krishna. The name of Krishna reveals the form of Krishna. Rupa Goswami gave this sequence. How can I see Krishna's form? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The name reveals the form of Krishna. Then you keep chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then the name reveals the qualities of Krishna. Then more Hare Krishna, Krishna Krishna. Then the name reveals the pastimes of Krishna. Rupa Goswami said, Tanama Rupa Charadari Sukhitanami Smrityo Krumena Rasana Manasini Yojan Chistan Praje Tadamuragi Janamudami Kalam Naya Dakila Vidyupadashvasa. What is the essence of all advice? The essence of all advice, we are doing this karma. Stay in Braj, Chistan Praje, be in Vrindavan. Okay, maybe we're not too much lucky, we cannot live here full time, but every year we should come. Gurudev would insist, you should come every year. Madhavi still awake? Being here and sleeping is not called Rajabas. Every class she sleeps, every class. This is big enough. We should stand up like Madhavi. So, just done every year we should come. Param Gurudev, someone asked Param Gurudev, I come here, I feel enthusiastic, when I go back I become weak. So that time there was no electric clocks, you had wind-up clocks, right? Even as a kid I remember my watch, you had to wind it every day, revealing my age. If you do not wind, it goes flat. So Param Gurudev said, if you don't wind the clock, it becomes flat. So you have to wind it regularly. So Param Gurudev would say you have to wind it twice a year. We have to wind our brains. Of course, they live in India, so it's easy for them. So you'd say every year, what is winding? Kartik Vrat, Kartik Parikram. And second winding is Navadvip Parikram. Because of various circumstances, we could not do our Navadvip Parikram, but from the 2026, we'll be doing Navadvip Parikram. Yay! But anyway, at least try once a year. Sell a kidney, or try and come. So, Tanama Rupa Charatari Sukhitana. Rupa Goswami said, what is the essence of advice? Live in Vrindavan.
We should have some desire for living in Vrindavan. Even we cannot live in Vrindavan, but we should think, I want to live in Vrindavan. In material life, you only get the result after an activity. In material life, you only feel satisfied after eating. But in bhajan, if you just think, I will do this, I want to do this, just by thinking that, you get the result. Like it said, if someone thinks, I will hear the Srimad Bhagavatam, I want to hear. Or there's a Bhagavad Saptaha coming. Yes, I want to come. But you don't go, you cannot come. But it said, just by someone who desires, I want to hear the Bhagavatam. Then the Bhagavatam says, at that moment Krishna appears in the heart of someone who just desires to hear. What is big? If Krishna appears in the heart of someone who just wants to hear, imagine what happens to someone who actually hears. I want sadhusanga. I want to be in Vrindavan. Just by this desire, also too much, someone who just thinks like that have too much security. I remember I came here in Vrindavan, maybe 91. I was not devotee, one type of Rakshas. But we walked from Delhi to Vrindavan. It took like 3 weeks. And we stayed here 2 weeks. But I remember he was like magic. I didn't know anything, Krishna, nothing. But it was such an atmosphere here, like magic. I remember, I'd wake up and he just, wow. You could feel this place is magic. And I remember clearly one night, every night I'd go on the street and get some carrot halwa. And I remember one night I was thinking, I've been everywhere in India. But there's no place like this. I like this place too much. One day I want to live here. I remember clearly the thought. I remember where I was standing, clearly I remember the thought. I want to live here one day. And Krishna hearing that, hopefully he didn't hear everything else. But Krishna take the essence of everything. Bhav Grihijana. We have a million fault, but one good quality. Krishna accept that. So Saraswati Thakur said, let them have millions of faults, but let them stay in sadhusanga. They will be rectified. They will be liberated. They will get devotion. So, if we want Krishna, Rupa Goswami said, stay in Braj. If you cannot always live in Vrindavan, you should stay by mind. Maharaj, come and save the devotees. So Tista, if you cannot live in Vrindavan, remember Vrindavan. If you're in Russia or if you're in wherever you are, remember Vrindavan. Every morning, how we remember Vrindavan? Take your mala every morning and remember. Gurudev would say, when you go from here, remember all these places. Gurudev would often tell us, when you chant mala, you remember all these people, all these places we're going. Remember. Radha Kunj, Sham Kunj, Giriraj Govardhan, this Sringharavat, Seva Kunj, the bank of the Yamuna. We can remember all these things. That is also bhajan. So that is the essence. Tadnama Rupa Charatadi Sukhi. This is sequence Rupa Goswami gives in Upadesha. Nam, Rup, Gun. Someone else Gopal said, how you know you chant the pure name of Krishna? How you know? Am I chanting Namaparad? You'll know because when you chant, you sleep. That's a good indication. Namabas or Sudhanam. Gopal said, how do you know when you chant the pure name of Krishna? He said, immediately, like a flash of lightning, the threefold form, bending form of Krishna will appear before you immediately as you chant the pure name. Because Krishna, his name is same. So he would say, after initiation, don't ask me where is Krishna. I've already given him to you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Krishna has so many names. So Namo Dev, Damodar, Ananta Vishnu, Prabhu. These are different names of Krishna. So Krishna has so many names. Some are primary names, some are secondary names, Gauna and Mukhinam. If we have time tomorrow, we'll talk about these different names of Krishna. Nam Namakari Bahodam. Krishna has so many names, unlimited names. Inside his names, Krishna has put himself inside his names.
we are too much unfortunate. Other things give us happiness, other things give us excitement to us apart from the name of Krishna. So we will hear all about this maybe tomorrow. Shri Kartik Prat ki jai, Shri Damodarashtakam ki jai, Go Premanande. Vande Gurun Padadvandam Bhakta-vrinda Samanavitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Saboditam Sri Nandanandanam Vande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samaditam Vrindavana Manoharam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निपला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिशु भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निपला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानी गुरुभाइयों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं श्री कृपा के प्रार्थना उपस्थित समस्त स्तंभजन मातृजन सभी के प्रति हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा व व्रत पालन करते हुए श्री दामोदराष्टकम इति त्रिक स्वलीला वीरानंद कुंडे स्वभूषम निवजन समाप्त तदीय सीता के सुभक्तर जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति इति इस प्रकार अनेक लीलाओं के द्वारा हजार हजार लीला गायन गुणानंद सानंद आदि देव शेषो धुना संवसति ब्रह्मा जी नारद से कह रहे थे भगवान की लीलाओं को कौन अंत पाए न अंतम विदाम हम मैं अंत नहीं जानता और तुम्हारे जो पूर्वज अग्रज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वो भी शेष नहीं कर सकते मुनयो अग्रज फिर माया बदस्य पुरुषस्य कुतो करे संसार में रहने वाले अनेक तापों से दग्ध जन्म मृत्यु जरा व्याधि में युवा व्यक्ति वो कितना उनकी महिमा को छू सकते जब अनंत हजार मुंह से शेष नहीं करते बहुत लीला है मधुर मधुर लीला है जैसे फल बेचने वाली शिव जी आए और कितने पर कृष्ण लीला करे बच्चों को कुछ पकड़ कर भाग रहे लौट रहे हैं जमीन में छाछ के लिए नाच रहे हैं कभी सालिग्राम को मुंह में दबा ले रहे हैं कभी बाबा की दाढ़ी हिला रहे हैं कभी डंडा उठा रहे हैं कभी लोटा उठा रहे हैं कभी सोटा उठा रहे हैं कभी गोपियां कृष्ण एक कमल चुरा करके उनका छुपा देते तो मैया के पास रोने लगते हैं मेरा कमल खो गए मैंने बहुत प्रकार के विनोद लीला थे सूरदास असल लीला के बड़े वर्णन एक एक लीलाओं का अगर वर्णन करूं बहुत और सब प्रकार के भक्तों में निकल कर दास तक असल मधुर भाव सब भाव क्योंकि अखिल रसामृत मूर्ति है सारे रसों का एक विषय है भक्त आश्रय है कृष्ण विषय भक्त हजार है भक्त रस की वैरायटी बहुत है लेकिन आस्वादन एक है अकेले कृष्ण का और इनका तो श्रृंगार रस मधुर रस जो सर्वस्व है क्योंकि मधुर है न समाप्त असल तो है सख्य है दास है लेकिन श्रृंगार सर्वस्व बहुत सुन रहे थे कल चमत्कार चंद्रिका का सुने और कई भाव रह गया
एक छोटा सा सुनो, क्योंकि मैं ज़्यादा कथा नहीं बोलूँगा। मेरी तरह में शाम को वहाँ 3-4 घंटा कथा करने को से कृष्ण अखिल कला निधि, अखिल कला गुरु है, और अपने कलाओं को भक्तों के बीच में प्रकाशित कर। भक्त भी कम कलाकार नहीं, लेकिन परस्पर कलाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन कृष्ण एक बहुत सुंदर नारी का वेश बना है, सामरी सखी। सामला तो है ही, और ऊपर से पीली साड़ी पहन लिए और कदम पुष्प हृदय पर लगा करके, और केस को बड़ा सुंदर सजाए, उल्टा आंचल लगा के, हाथ में बीना लेकर के, कानों में आंखों में काजल, कान में कुंडल, गले में हार, और पैरों में नुपुर बांध के नाचती फिराती ऐसे मार्ग से चली आई, और जानबूझकर उस रास्ते पे जा रही जिधर में राधा जी का कुंज है। राधा जी कुंज में बैठी और द्वार थोड़ा सा खुला है, और देख रहे दूर से उस सखी को देख के ललिता की साइकिल से कहने लगे, कौन? ऐसी सखी तो हमने कभी पहले नहीं देखा। कहाँ से आ रही? स्वर्ग से उतर गई है ताकि लक्ष्मी चली आई? कौन? ललिता जी बोले, उससे पूछा जाए। राधा जी को कौन तो बोले, बुला लो उसको, बुला। ललिता की सखा गई, बोली हमारी सखी बुला रही। बड़ा खुश हुई, आए। कहाँ से आ रही हो? मथुरा से। अच्छा, पास पे ही हो। मैंने सोचा स्वर्ग से उतर गई। बोला मथुरा के बाद तो क्या हुआ, लेकिन स्वर्ग से कम नहीं। स्वर्ग कलाकारों का जो गुण है वो कला मेरे कंठ में बस। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कलावली। कौन सा कला जानते हो? बोला संगीत कला में मैं पंडित। पंडित तीनों में, गाने में, बजाने में, नाचने में, संगीत प्रौद्योगिक कहा गया। 3 गात, बात, नृत्य। कैसे सीखा, कहाँ से सीखे? फिर अपने सब कहानी सुनाने। मैं मथुरा में रहती हूँ, और एक बार आंगिरस ब्राह्मण लोग वहां पर जग करा रहे थे, और विशेष जग में विशेष मंत्र पाठ के लिए विशेष स्पेशली स्वर्ग से बृहस्पति जी को बुलाया गया। देवगुरु बृहस्पति आए, और वो उसमें मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और मंत्र में देवताओं गुरु हैं, बड़े कलाकार हैं, संगीत को जानते। तो उस जग में उन्होंने गीत गाए, और मैं पास में गई थी यज्ञशाला में। मैंने गीत सुना, और सुन करके कान के माध्यम से उसको धारण कर लिया। और दूसरे दिन मैं जमुना किनारे कहीं पर गुनगुना रहे तो बृहस्पति जी के कान में संगीत चला गया, और बृहस्पति जी कहने लगे, कौन है जो मेरा कॉपी कर लिया? जैसा मैं गाता हूँ ऐसा ही गाता हूँ, कौन है? इसे मेरे पास ले आओ। मैं गया तो बृहस्पति बोले कि तुम शुद्धधर हो, और तुम्हारे अंदर में विशेष गुण है। मैं 1 महीना के अंदर में सब संगीत सिखाते। मैं हो भाग्य, और बृहस्पति जी ने हमको सब कुछ सिखा दिया। अच्छा, तो तुम इतना गुणवान हो, मेरी सखी बनोगे? कृष्ण बोले, आप अगर कृपा करो तो मैं तो सखी ढूंढ रही हूँ, कोई सखी मिले, सखियों के बीच में अपना कला प्रकट करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें सखी के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण सोचते, यहाँ बैठो, पास में उनको कुछ आसन दी, बैठो, डरो मत। बस एक ही बात का डर है, तुम मेरी सखी तो बन गई, लेकिन कितना दिन रहेगी मेरी सखी बन करके, वो कोई निश्चित नहीं। और ऐसी क्या बात? बोले बात है, ब्रज में एक व्यक्ति है, उसका नाम श्याम सुंदर है। नाम सुना है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा सुना। बड़ा नटखट है, मक्खन चुराता है, जबरदस्ती घर में घुस जाता है। वो बोला बस उसकी ज्यादा बात मत करो, अपनी चर्चा करो। बोले देखो, वो कृष्ण जब तक तुम्हारे दृष्टि में ना आ जाए, मैं समझता तभी तक तुम मेरी सखी बन के रहेगी। तू सामली और वो सामला।
जब दोनों मिलेंगे एक साथ में सामने सामना, तो हम गौरी को क्या याद करेंगे, क्योंकि दोनों का एक ही वर्ण है। तो कृष्ण को देख करके तुम जरूर मोहित हो जाओ। बोला ऐसी क्या बात है? बोला ऐसी बात है, मैं अपने अनुभव की बात बताया। कृष्ण से बोल रहे, कृष्ण उस रस को अनुभव कर। हम लोग भी बहुत अभिमानी थे, अपना कुल का अभिमान, रूप का अभिमान, गुण का अभिमान, लेकिन कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ने के बाद सब कहाँ भूल गए, कहाँ खो गया पता। ये सब लोक लाज संकोच, सास ससुर गुरुजन, ये सब का भय तभी तक है जब तक कृष्ण दृष्टि पथ में न आए। जब हमने कृष्ण को देखा तो सब लोग लाज बंधन टूट गया, छूट गया। जा दिनते देखो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूटो। चारु विलोकन कियो सुमार, संभार गयो मन सामने लूटो। सागर को सलिला जिम धावे, न रोकी रहे कुल के कुल टूटो। मत भयो मन संग फिरे, रस खान स्वरूप सुधा रस घूटो। जिस दिन से हमने नंदन कृष्ण को देखा, ये लोक लाज, घर का बंधन सब छूट गया, टूट गया। न तब जटिला के सुनते हैं, कुटिला के सुनते हैं, और किसी का भय नहीं। और जब कृष्ण ने हमें देखा तो अपना शरीर का कोई संभाल नहीं रहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लूट गए, धैर्य धन सब चला गया। और मन की स्थिति ऐसे हो गई जैसे सागर को नदियां तोड़ती हैं, और विशेष करके वर्षा ऋतु में उसमें अगर मार्ग में कोई वृक्ष आ जाए, पर्वत आ जाए, चट्टान आ जाए, पुल आ जाए, पहाड़ आ जाए, वो बाढ़ सबको बहा दे, सबको तोड़ करके फोड़ करके उस समुद्र को जाए। तो सागर को जो सलिला धावे, न रोकी रहे, लोग रोकते हैं, कौन रोकेगा उस बाढ़ को? ऐसे हम लोग भी सब फूल मर्यादा लोक लाज सब त्याग करें कृष्ण को, कृष्ण से प्रेम कर। कृष्ण दर्शन के बाद मन ऐसे मत हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति को कोई स्पेशल घूटी पिला दिया जाए। कृष्ण रूप का घूटी है, उसको जो पीता है वो उन्मत्त हो जाता है, और फिर उसी के पीछे पीछे घूमता है, उसको ढूंढते रहते। एक बार पिया तो 1000 बार देखने को, 1000 बार सुनने को, 1000 बार संग करने की इच्छा होती है कृष्ण। अच्छा, तब तो ये सब कथा नहीं सुनूंगे, कान में उंगली डालने डर लगता है। चलो तो बात की बात है, समय बताएगा कि कितना देर सखी बन के रहेगी, लेकिन जब तक मेरी सखी है तब तक अपना खाना तो कुछ दिखा दो, जिससे हम लोग भी अपने को धन करें। राधा से पूछते क्या मैं गाऊं, उन्होंने कुछ श्रुति कुछ स्वर बताए, उसका लय ताल मान सब बताए। बोले हे रात के आप तो मुझसे भी अधिक संगीतज्ञ लगते हैं। मेरा तो आज का सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जानकार के बीच में अगर आप उस चीज को कहेंगे तो जानकार लोग उसको सम्मान करते। भैंस के आगे बीन बजा के भैंस लगे पगुड़ा है, जो अनुभवी हो तो समझते हैं कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे धारा में चल रहा है, उसका प्रवाह कैसे है, उठा पटक तो नहीं कर रहा है, घसीट तो नहीं रहा, ढकेल तो नहीं रहा है, जो अनुभवी होते फिर क्या था, इसने तान छेड़ दिया, एक ही स्वर को, एक ही शब्द को, ताना ताना लेकर को ऐसा ऊपर नीचे अब आरोह किए, ताना ना 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 ताना ना 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 ना। हम तो संगीतज्ञ नहीं है, लेकिन वो लोग गाए होंगे तो कृष्ण कितना सुंदर गाए, ताना ना 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 ताना ना 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 ना। चकोरी बात बहुत रसिक लिखते, इस ताना ताना में इतना ऊपर नीचे किए, इतना उसमें जाति मिला दी, इतना स्वर मिला दिए, राधा ने बोलते मान गया। मेरा आपसे बहुत प्रसन्नता हुई, और इतना सुंदर गाने वाले को कुछ उपहार दिया जाए। राधा ने बोले हमारे जो सबसे सुंदर वस्त्र है, श्रृंगार का जो सामग्री है,
सब लाया जाए, हार काजल वो जो भी ब्लाउज आदि जितने सब आज मैं अपने हाथों से उसको धारण कराऊंगा। ये सब खोलो, ये बहुत देर हो गया इसको पहने मेरा उपहार ले। ये सुन के कृष्ण का तो हालत खराब हो गया कि अभी तो मैं पकड़े जाऊंगा। बोले नहीं नहीं दे दो, घर में जाकर के आराम से पहनेंगे, घर में पहन लेंगे, हम नहीं पहने। सखी लोग बोले संकोच की क्या बात है, तुम भी सखी हम भी सखी, सखियों के बीच में संकोच क्या है? तो घर में अपने से पहनेंगे फिर देखेगा कौन? हम अपना वस्त्र पहना के देखना चाहते हैं कि तो कैसी लगती इन वस्त्रों में, और अगर तुम न पहनेगे तो हम लोग पहना देंगे। हजारों सखी एकत्रित हो गए, राधा ने आदेश पहना दो। ये बहुत लज्जा कर गए, कोई आगे से पकड़ा कोई पीछे से पकड़ा और उसके वस्त्र हटाने लगे पहनाने के लिए, और जो कदमवादी का पुष्प था वो गिर गया और उसके बाद सब फूल पट्टी खुल गई। बोले अच्छा आए थे यहाँ पर कलाकारी बेचने, संगीतज्ञ बन करके। कृष्ण पहले तो बड़े दुखी हुए क्योंकि उनका जो कला था बिका नहीं, बीच में सब भंडा फोड़ हो गया, और जिस भाव प्रेम को प्राप्त करना चाहते नहीं कर पाए, दुखी होकर वहां से चल पड़े, थोड़ा नाराज हुए, दुखी हुए, और जो दोनों जो कदम पुष्प था उसको फिर उठाए, फिर सखी बनाए अपने, और बोले ऐसे काम नहीं पड़ेगा, सास के पास चलो। तो कृष्ण जटिला के पास चले गए और पैर में सिर रख के पटकने लगे, मैं मर जाऊंगी, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं, जीवन बोझ हो गया। अरे जटिला कहने क्या हुआ बेटी क्या हुआ? बोला मेरा कोई बहन नहीं, एक ही बहन और वह राधा, मैं उनके मौसी की बेटी हूँ, उनकी जो माँ जो है कीर्तिदा और मेरी माँ दोनों बहनें हैं, इसलिए हम लोग मौसी बहने। और मैं कई साल से उससे मिली नहीं, बहुत दिन के बाद मिलने आई, कुछ बात करने लगे और कुछ हृदय से लगाना चाहती थी, और वो हमको डांट डपट के भगा दी, तू मेरी बहन बनना चाहती, जा यहाँ से। बहुत बहने बन गए ऐसे कुछ मेरे को, इससे बहुत दुखी हो गया, मेरी बहन ने मेरा ऐसा अनादर कर दिया और वो भी राधा रानी, तो मेरा जीवन का क्या मतलब? इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। जटिल अभी शांत रहो शांत रहो, मैं अभी सब ठीक कर दूँ। राधा जी को बुलाए, बोले इतना दिन के बाद बहन आई है, इससे बात नहीं करती हो और नाराज हो और कुछ इसको गाली दी, अब सब तो बोले। राधा ने बोले नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। बोला ऐसा कुछ नहीं किया, जब इसके प्रति कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है तो इनको हृदय से लगाओ। और जटिला अपना हाथ राधा रानी के हाथ अपने सिर पर लेकर बोले तुम्हारी मेरी कसम, सास की कसम, ऐसा करो, मेरे सामने करो। राधा रानी बोले कि माँ जी मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत बदतमीज है, तो बिगड़ी हुई है कुछ ऐसा। क्या एक कुंद लता है ना, इससे बहुत लड़ाई की। कुंद लता को ऐसे फालतू में गाली गलौज दे रहे, इसलिए इसका स्वभाव को देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। बोला तू तो पहले बहुत अच्छी थी, अब इतना कैसे बिगड़ गई, इतना कैसे तुम्हारा स्वभाव खराब हो गया? कुंदलता बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। और कृष्ण बोले नहीं नहीं मैं इसको गाली नहीं दिया। राधा ने बोला गाली नहीं दिया, इसको गले लगाओ इस सखी से, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारे इसके प्रति कोई नाराजगी नहीं है। फिर क्या था, जटिला कुंदलता और कृष्ण को सामने सखी बने थे, कुंदलता उनके भाभी दोनों को गले खूब लगाए और सखिया खूब जोर से हंसने लगे। और उसके बाद में ललिता बोली कि जब भाभी को गले लगा ही लिया है तो फिर भाभी से प्रेम करो, ऐसे कुछ हास परिहास होने लगे। कुंदलता बहुत नाराज हो गए, तुम्हारा तो सारे शरीर में कुटिलता भरा हुआ है, कोई देवर भाभी या कोई भाई बहन आपस में क्या गले नहीं लगते शुद्ध भाव से? और तुम उल्टा उल्टा सोचते से बोल के कुंदलता वहां से चले गए और कोई वहां नहीं रहा। जटिला सोचे में शांति हो गया। इस प्रकार कृष्ण लीला के द्वारा पूरे उन सखियों का आनंद के समुद्र में डुबा दिया। ऐसे आनंद लीला
इति कृष्णलीला लीलानंद। कभी इस लीला स्वादन के लिए फल वाले चले आते हैं। सुबह सुबह में नंदन के दर्शन की बड़ी लालसा है। बरसों से सुनी है कि यशोदा जी का पुत्र है, बहुत मिला है। एक बार मैं भी देख लूं, वास्तव भाव से कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं। और गोकुल के गलियों में घूमती रहती है फल लेकर, कई दिन से घूम रही है, कहीं कोई नजर नहीं आया। आज ऐसा मन में लेके आए कि आज जरूर दर्शन करूं। ये जीवन ऐसे बीता चला गया। जीवन है लो शेष न भजिलो विषय, जीवन बीते घड़ी घड़ी का। ऐसे जीवन चला जाएगा। 80 साल के होने वाले बाबू तक कोई दर्शन नहीं, 75 हो गया, 80 हो गया। वो गोकुल के गलियों में आ गए और जोर से आवाज लगाए, कृणि वो फालानी, कृणि वो फलानी की सुत्वा सत्वरम अच्युतम। कृष्ण ने सुना कि कोई फल वाले आवाज लगा। देखिए गोकुल गलियों से कृणि वो फालानी इति श्रुत्वा सत्वरम अच्युतम फालार्थी धान्यम आदाय जजो सर्व फल प्रदाय। What page? Achyutanam. उसमें नहीं, इसमें देखना है, चश्मा होगा इसमें ले आ। इस घर में से Balaram la. पूरा उसको दे दो लेकर। तो फल गोकुल गलिया से पुकार। फलार्थी फल पाने के फल लेने की इच्छा से कृष्ण तुरंत दौड़ लगा। लेकिन कृष्ण ने देखा था कि कोई भी गोकुल में कुछ बेचने आता है या आती है तो बदले में कुछ देना होता है। धान, चावल, गेहूं, चना, ये अनाज दे दो और बदले में सामान ले लो, जो भी सामान ले लो। तो फल वाले आए, बिना कुछ दिए लिए तो दे नहीं सकते। तो तुरंत घर में दौड़े और एक मटका से फल लेने की इच्छा से धान उठाए, ऐसे अंजलि खाए और बड़े तेजी से दौड़े। क्योंकि जो गली में घूम घूम करके बेचते हैं वो ज्यादा देर रुकते नहीं, बोलते बोलते पार हो जाते, इसलिए जल्दी से दौड़ लगा और द्वार पर आकर के बोलने लगा, अरे फल वाली, अरे फल वाली, मुझे फल दे दो, मुझे फल दे दो। इनकी मीठी बातें सुन करके फल वाली रुक गई और अपने टोकरी सिर से नीचे रखा, आ जाओ। ये भी गए उनके टोकरी में ऐसे जो अनाज था डाल। लेकिन घर से बाहर आते आते जो भी अंजलि में अनाज भरे थे उसमें से 95% जो था सब गिर गए। 2-4 दाना बचा होगा, क्योंकि वो अंजलि ठीक से बांधना नहीं चाहता, ऐसे बांधे और सब बाहर। लेकिन वो जो 2-4 धान ही कम नहीं था, उससे टोकरी रत्न मानिक मोतियों से भर गया और हाथ ऐसे फैला दिए। उसी के भजन में भाव है, थोड़ा सा सुन के कथा को विश्राम देंगे। और कृष्ण का चमत्कार है, इतने अंजलि में सारे फल लेके आ भी गए। उसमें जो उसने गाया, जो पुकार लगा, जो फल बेचते समय उनका जो भाव है, मनोदशा, मन की स्थिति, भक्ति कैसे हो। गोकुल गलियों से पुकार, गोकुल के गलियों से कोई पुकार आ रहा है, कोई बोल रहे हैं, गोकुल गलियों से पुकार, कोई फल ले लो रे, फल वाले, फल वाले, फल वाले आए 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 रे, गोकुल गलियों
फल है, मधुर है और खूब रस भरा हुआ है, और एक प्रकार के नहीं है, अनेक प्रकार के फल है। किसी को लेना है तो ले लो। फल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, फल पाना चाहिए। मधुर फलवार साल कोई फल ले लो रे, मधुर फलवार साल कोई फल ले लो रे। फलों में सबसे जो मधुर और मीठा और श्रेष्ठ फल होता है वो होता है आम। सभी फलों का राजा आम, मीठा मीठा ताजा आम, ले लो खा लो आम। इसमें पहले आम का नाम बता रहे। मेरे पास अनेक प्रकार के आम हैं, मालदा है, दशहरी है, चौसा है, और पता नहीं कितने प्रकार के आम अभी याद में नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत आम की वैरायटी लेकर के आए, बहुत प्रकार। आम, केला, संतरा, नाशपाती, अंगूर। आम, केला, संतरा, सेब, लीची, चीकू, पपीता, खजूर। सेब, लीची, चीकू, पपीता, खजूर। अनार, अमरूद, अनानास, शरीफा, रसभरी। अनार, अमरूद, मौसमी, नारियल, तरबूज, चेरी। खट मीठ अनेक प्रकार कोई फल ले लो रे, खट मीठ अनेक प्रकार कोई फल ले लो रे। फल वाले आए रे, फल वाले आए रे। अनेक प्रकार के फल है, कुछ खाटा है, कुछ मीठा है, और कुछ थोड़ा थोड़ा तीखा, कसैला, अनेक तरह के फल हैं। लेकिन वो फल बेचने वाले पहले तो फल के नाम बता रहे थे, लेकिन कृष्ण स्मरण में इतना डूब गए कि फल के नाम भूल गए। क्योंकि जब जो स्मरण करेंगे, विषयो ध्यायतो विषय चित्तम प्रलीयते, मम ध्यायतो मम चित्तम प्रलीयते। अगर कोई विषयों का चिंतन करता है तो चित्त विषयों में डूब जाता है, और वहां से मन को निकाल कर कृष्ण चिंतन करेंगे तो कृष्ण में डूब जाएंगे। तो अभी तक तो फल का नाम बोल रहे थे, लेकिन मन फल से निकल गए और कृष्ण में आविष्ट हो गए, इसलिए फल के नाम भूल गए और क्या कहने लगे। गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे, गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे। कृष्णावेश में कृष्ण स्मरण में भूल गए फलों का नाम, और फल के जगह पर कृष्ण नाम बोलने लगे। गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे, दामोदर को लेने में थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, बांध के रखना पड़ेगा। बहुत शैतान है, बदमाश है, इसलिए मैया ने बांध दिया। इसलिए बोले नटखट दामोदर लाल कोई जल्दी ले लो रे, नटखट दामोदर गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे, गोविंद लो माधव मधुसूदन ले लो रे। नटखट दामोदर लाल कोई जल्दी ले लो रे, नटखट दामोदर लाल कोई जल्दी ले लो रे। मधुर मधुर साल कोई फल ले लो रे, मधुर मधुर सुन के मोहन के मुख में पानी भर आए। इतने सारे फल, मक्खन खाते खाते थोड़ा स्वाद बदलना चाहिए। फल का एक अलग ही रस आनंद है, इसलिए जैसे सुने वो भी दौड़ पड़े। अंजलि भर धान दौड़ मोहन चले आए, अंजलि भर धान दौड़
डाल डलिया हाथ फैलाए, दे दो हलवा रसाल कोई फल ले लो रे, दे दो हलवा रसाल कोई फल ले लो रे, दे दो हलवा रसाल कोई फल ले लो रे, दे दो हलवा रसाल कोई फल ले लो रे। फलवाले फलवाले आए, फलवाले 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 आए। मोहन फल के नाम सुन करके अन्नी में धान भर के दौड़े हुए चले आए, और दौड़ में सब धान गिर गया, 2-4 दाना बचा और डलिया में डाल के हाथ ऐसे किए, ये मधुर रसाल फल दे दो। फल वाली बोली कि 2 दाने में इतना फल बहुत सस्ता लग रहा है, थोड़ा दाम बढ़ाओ, थोड़ा और कुछ लो। वो कहने लगे और कुछ नहीं है, चौथा दे दिया, अब तो मैं खाली हूँ, बस कमर में वो क्या बोलते करधनी है, ये नहीं दे सकता, मैया मारेगी, बड़ा प्रेम से बांधी है। बोले ये नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख, तो और क्या चाहिए? बोला बस मोहन बैल सुन फल वाली हुई भी हो, मोहन निर्षाम सूरत नैनन बहलो, कृष्ण की मीठी मीठी बात सुन करके फल वाली आनंद में विभोर हो गई, आंखों से अश्रु की धारा बहने। बजाते रहो धीरे 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 धीरे। और कृष्ण को सामने मूर्ति को देख करके, उस बाल रूप को देख करके बादशाह घोमे रोने लगे। अब बोले कन्हैया, जो मैया को जो भाव देता है, जिसके बदले में इतना मक्खन मिश्री खाता है, वो दाम एक बार मेरे को भी दे। और वो क्या है? और एक बार मेरे गोद में बैठ करके मैया का, ओ मेरी मैया, प्यारी मैया, भोली मैया, अच्छी मैया, मैया 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 ऐसा वो कहने लगे। बोली क्या बोलती है? मैया मैया पुकार सब फल ले लो रे, मैया 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 पुकार सब फल ले लो रे, मैया मैया पुकार सब फल ले लो रे। फल वाले आए, फल वाले आए। कृष्ण बहुत चिंता में पड़ गए, ये अनजान रास्ते चलते को अगर मैया मैया कह दिया और गोपियों ने देख लिया और सुन लिया, तो मैया को जाके कह देंगे कि जिसको जिसको मैया मैया करता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका पता नहीं कितने मार है। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। और अगर इसको मैया नहीं किया तो फल हाथ से गया। इतना फल मिलता है खाली मैया मैया खाने में, तो बहुत सस्ता है। बालक स्वभाव और भक्त वत्सल पहले तो चिंता में पड़े, लेकिन इधर उधर देखे कोई है तो नहीं। बोला कोई नहीं है, न कोई इधर है न उधर है। श्याम पड़े चिंता में देखे और श्याम पड़े चिंता में देखे, झट चढ़े गोदी में बोले मैं भैया तू, झट चढ़े गोदी में बोले तू मैया मैं, झट चढ़े गोदी में बोले तू मैया मैं तू, इधर देखे उधर देखे कोई नहीं है, झट से गोदी में चढ़ गए और एक हाथ से थोड़ी पकड़ करके एक हाथ से सिर पर रखे और गर्दन को थोड़ा छोड़ी ला के, अरे मैया, अरे मेरी अच्छी मैया, बहुत बढ़िया बढ़िया फल लाई हो मैया, फल दे दो फल। सब फलवा हम कोई फल ले लो जी, सब फलवा
सब फल मेरा है। तो मेरी मैया है और मैया का फल जितना होता है सब बेटा का होता है। फल वाली बोले कोई बात नहीं, तू सब ले जा, टोकरी उठा के ले जा। बोले टोकरी नहीं चाहिए, हाथ में दे दो, क्योंकि टोकरी ले गया तो फिर कल नहीं लाएंगे, कल फिर लेके आना। तो टोकरी ले जाओ, भर भर के रोज लाना। और जितना फल था वो विभोर होकर के सब कृष्ण के हाथ में दे दिए। कृष्ण लेके आए, मैया ने फल देखा गोपियों ने और सबको फल बांटे, सब पाए, लेकिन फल कम नहीं पड़ा। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण व्यवस्थित। और फल वाली को क्या फल नहीं दिए, जिनका पुत्र बन गए उसी भाव में फल वाली उन्मादनी होकर के मथुरा को चली। टोकरी भारी देखा, उसमें धन धन संपत्ति भरा हुआ, सब जमुना ने फेंक के रोने लगी, कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो बस। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रजवासियों को, जब एक फल बेचने वाले गाय बछड़ों को, यहाँ की कुलीन कन्याओं को जब इतना प्रेम देते हैं, तो ब्रज के गोपियों को क्या देगा। वो अति धन्य ब्रज गो रमण्यम स्तन्यम मृतम पीतम अतीवते मुदा। जिनका स्तनामृत को पीते हैं, जिनके प्रेम को भी इतना स्वादन करते हैं। सबसे बड़े वस्तु तो आप हैं और आप इनके हैं, अब आपके पास क्या देने को है। तो मैं सोचता हूँ तो मेरा सिर चकराता है कि आप इनको कुछ नहीं दे पाएंगे। जो देना था तो दे दिए, खुद ही आप इनके हो गए, आप इसके ऊपर कुछ है नहीं देने को। इसलिए इनके ही आपको हमेशा हमेशा इनके बन के रहना पड़ेगा, इनका ऋणी होना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते ना पारे हम निर्वत्य संयुजाम स्वसाधु कृतम विबुधायु स्वापिवा जा मां भजन दुर्जर देह श्रृंखला समृष्ट तद्व प्रतिजातुसा। जो हमारे लिए सारे त्याग करके मेरे वैसे पुत्र सखा प्रियतम से भजन करते हैं, उनके बदले मेरे पास देने को नहीं है। मैं इनका तो हो ही गया हूँ और ऋणी होकर रहता हूँ, इनका सेवक बन के रहता हूँ, इनसे कभी अलग होना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनके प्रेम ने हमको बांध लिया। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगा। इस प्रकार इति स्वलीलाधीरानंद कुंडे स्वघोषम निवजंतमाख्या पयंतम तदीय सीता के सुरभक्त जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम सता वृत्ति बन। आए कहीं प्रणाम करते इस लीला को। कल शिव जी की लीला सुन लेंगे, वो भी इस लीला को देख के यहाँ दर्शन आए थे और उन्होंने इस लीला को प्रणाम किया, उसको कथा कल सुनेंगे।